शुरू कर दिए हैं। एनिमल्स में फॉर्म्स एंड फंक्शन जो है चैप्टर 10 था। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आर द टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल। पता है? तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन टू टाइप्स का स्केलेटन है, पता है? स्कल प्रोटेक्ट क्या करता है? स्कल प्रोटेक्ट किसको करता है? ब्रेन को। और रिबकेज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। क्लियर है? बोलो। रिबकेज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को। तो कितने टाइप के हैं स्केलेटन? एक्सो स्केलेटन और एंडोस्केलेटन। और दूसरा जो होता है स्कल्स किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। और रिबकेज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स। ओके। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं एंड कॉलर बोन्स होते हैं। जॉइंट बिटवीन द बोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। Joints between the bones are of 3 types: fixed or immovable joints, partially movable joints, and freely movable joints. Freely movable joints are of this type: ball and socket, or hinge joint, pivot joint, gliding joint, and saddle joint. Earthworm crawl while snails creep on the ground. Cockroaches cannot fly actively. However, they can walk and run very fast. Fishes are adapted for swimming. They have fins for swimming. The body of a bird is highly specialized for flying. The body of organisms may be composed of a single cell or of thousands or millions of cells. The organisms are classified as unicellular and multicellular organisms. यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हैं? एमोइवा, यूग्लेना, पैरामीशियम और यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर के कौन कौन से हैं? एमोबा, हाँ, यूग्लेना और पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? हाइड्रा एंड कॉकरोच। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट जॉइंटली परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. Muscles, bones and bloods. Muscles, bones and blood are the tissues in our body. The muscular tissue is responsible for the movement of body parts. Clear? Organ क्या होते हैं? What are the organs? A number of tissues working together organ क्या होते हैं? नंबर ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन मेकअप एन ऑर्गन. ठीक है? डज द हार्ट टेक एनी रेस्ट? नो, द हार्ट नेवर टेक्स रेस्ट. That is, it never stops working. It stops working only when an animal dies. Testis is an organ of male reproductive system. Stomach is a part of digestive system. Bones and cartilage are tissues. Excretory system has kidney and ureterus. Respirative system transfer oxygen to the blood.
Type of skeleton: exoskeleton. The skeleton present on the body surface outside is called exoskeleton. It is formed of non-living substance. It occurs in the form of scale in fish, epidermal scales and bony scales in reptiles, wings, feathers and claws in birds and hair, nails, claws and hoofs in mammals. क्या हुआ? एंडोस्केलेटन जो है, द हार्ड स्केलेटल फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. टाइप्स ऑफ बोन्स: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स. लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन होता है. बोन्स ऑफ रिस्ट एंड पाम शॉर्ट बोन्स में आ जाएंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं. फ्लैट बोन्स. These are bones of skull, ribs, shoulders and hips. The human skeletal system. The human skeletal is formed of 206 bones, though an infant at birth has 300 bones. Some of them fuse as the baby grows and only 206 bones are found in an adult. Human skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton. This is the human skeletal system. Skull, jawbone, collarbone, humerus. ह्यूमरस है, रिब्स है, बैकबोन है, हिप गर्डल है, रेडियस अल्ना, हैंड बोन्स, फीमर. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन. नी कैप, टिबिया, फिबुला. जो नीचे वाले पैर में है, टिबिया, फिबुला. रूट बोन्स. ये देखिए टिबिया है. दिस इज टिबिया, दिस इज फेबुला. फुट बोन्स, नी कैप, फीमर. दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर बोन. नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमरस, अपर आर्म. जिसको ह्यूमरस को अपर आर्म बोन भी कहते हैं. ऐसे ही साइड व्यू है ह्यूमन स्कल का. फ्रंट व्यू, बैकबोन वर्टेब्रल कॉलम है. एकदम बढ़िया डायग्राम दिया है. द वर्टेब्रल कॉलम देखो यार. नेक रीजन, ये चेस्ट रीजन, बेली रीजन, हाइप या हिप रीजन, टेल रीजन, रिबकेज. ये 12 पेयर्स में होते हैं. 12 पेयर्स मतलब एक इधर एक इधर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सही है. शोल्डर बोन्स है. दिस इज शोल्डर बोन्स, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन्स. बोन्स ऑफ फोरलिम्ब आर्म. ये देखो हैंड का पूरा बोन दिया हुआ है. अपर आर्म वाला हो गया ह्यूमरस, लोअर आर्म वाला हो गया रेडियस, मजबूत वाला अल्ना. पाम बोन्स, हिप बोन्स.
Skeleton form the supporting framework of the body. Production of blood cells is the major function of bones. There are 33 vertebrae in human backbone. The forearm is supported by 3 long bones. Joints. Joints are points where 2 bones are joined together. The movement of our body or its part is possible because of joints. These are the muscles. और मसल्स जहाँ ज्वाइन होते हैं एंड पे उसको टेंडन. The muscles are attached to the ends of the bones by the bands of tough fibrous connective tissue called tendons. The ends of the bones are covered with soft cartilage. It acts as a cushion between the bones and prevents them from rubbing. The cartilage reduces friction between bones and absorbs the shock. The cartilage pads are present between the vertebrae and at the ends of long bones. Type of joints. इमूवेबल या फिक्स जॉइंट हैं. पार्शियली मूवेबल जॉइंट हैं. फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. ये देखिए आप साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल कार्टिलेग, साइनोवियल फ्लूइड, बोन्स, ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint, saddle joint. This is ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint, saddle joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ अपर आर्म एंड शोल्डर. थाई बोन्स एंड हिप बोन आर बॉल एंड सॉकेट. हिंज जॉइंट में एल्बो जॉइंट बिटवीन अपर आर्म एंड फोर आर्म. पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल जॉइंट बिटवीन एन स्कल एंड फर्स्ट वर्टेब्रा. Next is gliding joint. Gliding joint between wrist bones. Saddle joint, thumb joint. This is the thumb joint. Saddle joint. Movement of arm. Elbow and knee is an example of hinge joint. The cartilage disc is present between the vertebrae and backbone. Movement of bones is brought about by the contraction and relaxation of muscles. The cartilage present between the two bones absorbs shocks and reduces friction. The up and down movements of our arm are controlled by biceps and triceps. Locomotion of earthworm. Earthworm moves by crawling, produced by the alternate contraction and relaxation of the muscles of the body wall. Bristol-like projections called setae provide grip to earthworm on the surface. These are the example direction of movement: elongated body, contracted body,
इसी तरीके से लोकोमोशन इन स्नेल, कॉकरोच, लोकोमोशन इन फिश. Cockroach has 3 pairs of legs. The ends of the leg have claws and adhesive pad. Cockroach has 3 pairs of legs. Legs have claws and adhesive pads. Locomotion in snakes. Snakes do not have legs. Their body is long and cylindrical, supported with a long backbone. The well-developed body muscles are connected to each other end of the vertebrae, ribs and skin. Bones, a piece of hard tissues making up of the skeleton. Cartilage, a flexible tissue which is later replaced by bone. Cranium, the part of his skeleton that encloses the brain. Endoskeleton, the hard skeleton that supports body from inside. Exoskeleton, the hard skeleton that covers the body.